morning class. Class, we were talking about refractive index, right? So in the last lecture, we have a small idea about refractive index. Today we are going to study about what is absolute refractive index in detail, number one. Then we study about the refractive indexes of various materials, and then we solve numerical based on refractive index and all the questions that came in exam up to the topic reflection we have covered. Okay, shall we start? So, the topic for today is absolute refractive index. Okay, beta? So this is the topic of today. We are going to study about absolute refractive index. So what is absolute refractive index? I have told you about what is refractive index. It is a constant which comes for a material. Now, absolute refractive index, the refractive index of a medium, the definition of it is, it is the refractive index of a medium with respect to air or vacuum. Okay, we call it vacuum, but it's correct. Its correct pronunciation is vacuum. Okay, so the refractive index of a medium with respect to air or vacuum is called absolute. It's called absolute refractive index. Absolute. This is the proper definition. ठीक है, तो क्या होता है, हमें पता है, अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होती है. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको बताया था स्नेल्स लॉ से, दैट बाय स्नेल्स लॉ sin I upon sin R comes out to be a constant, and that constant is mu. और उसी mu को आप बोलते थे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल. जिस मटेरियल में लाइट गई है, उस मटेरियल में उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है वो आपको बता देंगे. अब एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है, यू आर फाइंडिंग आउट दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर. आपको याद है, यहाँ पे मीडियम 1 मीडियम 2 लिखते थे, दैट इज इक्वल टू मीडियम 2 डिवाइडेड बाय मीडियम 1. सो दिस इज मीडियम 2, जिसकी भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, वो आप ऐसे लिखते थे. अगर मीडियम 1 इज वैक्यूम, अगर मीडियम 1 वैक्यूम है या वैक्यूम है, तब उसकी रिस्पेक्ट में किसी भी मटेरियल की जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाली जाती है उसको तो आप क्या बोलते हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, फॉर एग्जांपल, आई होप यू ऑल हैव नोटेड डाउन. नाउ आई विल एक्सप्लेन. फॉर एग्जांपल, if you take air and water. Now see, air and vacuum comparatively are same, because vacuum is actually having no molecules of any material, while air is having some molecules of gases in it. ठीक है, तो आपको पता है एयर भी बहुत रेयर है, तो उसमें भी पार्टिकल्स बहुत दूर है, तो इट बिहेव्स, और हम उसे वैक्यूम और एयर को कंपैरेटिवली सेम ले लेते हैं. तो अगर एयर या वाटर में मतलब कंपेयर करके वाटर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालो, तो यू विल राइट म्यू डब्ल्यू. इस तरह आप एयर लिख लेते हो, फर्स्ट मीडियम इज एयर. यहाँ पे हम लोग एक्चुअली क्या निकाल रहे हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल रहे हैं. इस पूरे टर्म को आप सिंपली लिख सकते हो म्यू डब्ल्यू. इंस्टेड ऑफ राइटिंग एयर और वैक्यूम, यू ओनली कैन राइट डब्ल्यू ऑन द राइट हैंड साइड. It gives the refractive index of water. ठीक है, it gives the refractive index of water that comes out to be 1.33. ऐसा देखा गया है, 1.33 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आती है वाटर की. अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट. ये 1.33 का मतलब क्या है, इस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है that when the light ray traveling from air or vacuum, when enters in the water, it get bended by 1.33.
This is the extent by which the light ray got bended towards the normal. ठीक है, ये चीज समझ में आया बेटा? तो this is all about absolute refractive index. Now we are going to understand about. So now we are going to study about absolute refractive index, or simply it is called refractive index. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ये सिंपली क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. किसी भी मटेरियल की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल. यानी एयर से अगर कोई भी लाइट रे एंटर कर रही है वाटर में या किसी अदर मटेरियल में, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इट कंपेयरिंग विद एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल. For example, we are going to take the refractive index of, I am going to give you a table in which I am going to give you the materials and their refractive index. So here the materials are, I am going to have a material called air. सबसे पहले आप air की refractive index देखते हैं कि अगर लाइट में वैक्यूम से आ रही है और एयर में एंटर करती है तो किस एक्सटेंट तक बेंड होगी. ओके, सो द आंसर इज 1.0003. This is the refractive index of air. Now the second one is, उससे ज्यादा रिफ्लेक्टिव आपको क्या करना है, छोटे से बड़े में आएंगे तो आइस की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती है 1.31. वाटर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अभी मैंने आपको बताया था, इट इज 1.33. यू हैव टू लर्न सम व्हाइल मोस्टली इट इज गिवन द क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन होगा क्वेश्चन में, और आपको सीधे सिर्फ न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है. यू हैव टू फाइंड द whether it's speed, you have to find the speed or the refractive index of any of the material, और जो आप कभी कंपेयर कर रहे थे वो कंपेयर करके निकालने को. So the other materials are kerosene. Kerosene का मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था. Kerosene is having 1.44. Refractive index of kerosene is 1.44. उसके बाद important one is diamond. Diamond is the material which is having the most, refractive index, and that is about 2.42. This is the refractive index of diamond. When light ray travels from air to diamond, it got bended by an extent of 2.42. Am I clear? So these are the refractive index of various materials. I hope all of you got a refractive index. What is refractive index? What is absolute refractive index? Formulas of refractive index and how it is compared to the speed of light. Now, for better understanding, we are going to do some numericals. So, I am going to take the first numerical which is based on refractive index. The question which came is, light enters from air to diamond with a refractive index of 2.42. Light enters from air. Light enters from air to diamond with a refractive index of 2.42. What is the speed of light in diamond? The question is, what is the speed of light in diamond? Further, it is already mentioned in question that the speed of light in air is c, and that is equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay. Now, this is a question which came in exam. In this, it is given that this is medium 1, which is air, while this is medium 2, which is diamond. Okay. Now they have given you that diamond का refractive index is 2.42. Now you know that diamond का refractive index mu भी आपको दिया हुआ है. It is of course
because of it is comparable to air. जब air से diamond में light ray enters करती है, then it is having a refractive index of 2.42. Now see, this is light ray coming and it got bended towards the normal. This is I. This is angle of incidence. अगर light ray की speed air की c थी 3 into 10 to the power 8 meter per second थी, तो when it got reflected from diamond, तो इसकी किस स्पीड से ये जाएगा, you have to find that. You have to find speed using V symbol with d means diamond wave. Now you know the formula that. When I rub this, I hope I rub this part so that you can understand how to do the numerical. So, I hope first to understand the picture of the question, how this question is made and what we are going to find. Now the answer will be, the given things are mu d. आपको mu d दिया हुआ है क्वेश्चन में. mu d मतलब refractive index of diamond, that is 2.42. while whatever else is given, आपको speed of light दिया हुआ है, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. And you have to find Vd, velocity of light in diamond. Now you know the formula that refractive index of d with respect to air, or simply mu d is equals to velocity speed of light upon speed of light in that medium, that is equals to diamond. This is the formula. I have told you about it in my last video. So this become what? mu d is equals to c की वैल्यू आपको 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड दिया है, यहाँ पे 2.42 दिया है. Just solve it, पॉइंट हटाकर you can write this at 300 upon 242 into 10 to the power 8. 10 to the power 8 को आप छेड़िए नहीं, उसको एज इट इज रहने दीजिए, सिंपली इसको डिवाइड करिए. तो when you divide it, you will get the answer about mu d equals to 1. You can solve it. The answer comes out to be 1.42 into 10 to the power 8 meter per second. So now you can understand that from having a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second, how does the speed, sorry, this is not mu, this is Vd, right? So how, this is, you can see the change in the velocity. आपकी स्पीड लाइट की कितनी है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है जब वो एयर में मूव कर रही है. एंड व्हेन द मीडियम इज चेंज, जैसे ही मीडियम चेंज हो जा रहा है एंड द मीडियम बिकम डायमंड, तो यू कैन सी द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस्ड बाय हाउ मच, 2.42 टाइम्स कम हो गई है एंड बिकम्स 1.24. ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज व्हाट द importance of refractive index. You can understand how the speed of light changes from one medium to the other. So these kind of questions will come in exam from refractive index. I hope all of you understand it. Please just have a look on it, and after this we will do the next question that came in exams and CBSE papers. We have to solve it. Okay? Yeah. Okay, now if you go to NCERT, at page number 176, you are having a question based on refractive index. I will show you the question. The question simply is, when the light ray enters from air to glass, now this time the material is not diamond while the material is glass. So the material is glass. We are going to have the question which are mostly based on air, water, glass and diamond. ठीक है, तो air, light enters from air to glass having refractive index of 1.50. आप पेज अपनी इंसाइड में क्वेश्चन देख सकते हैं. ठीक है, what is the speed of light in glass? The question is similar, exactly similar. I hope you will do it by yourself. But since the question is from NCERT, I will help you out. What is the speed of light in glass? The question is as similar as the previous one. I hope you all have done it up to now. अब आपको सबको पता है that what
The speed of light in vacuum already given है, क्वेश्चन में भी और वहां पे भी given है. कितना होता है 3 into 10 to the power 8 meter per second. You have given the mu g. This time not mu d. This time it is mu g, and you have to find the vg. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है. So this time, what is given? This time you have given the refractive index of glass, and that is equals to 1.50. While this, velocity of light in air is given 3 into 10 to the power 8 meter per second. You have to find the velocity of light in glass. Now you know that the formula of refractive index is mu g is equals to speed of light in air and upon speed of light in the material. Here the material is glass. So the formula for Vg will be equals to, यहाँ पे आप Vg रखोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ पर आएगा तो mu g नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में. I think in this question we have not done this. Just repeat that. So the after cross multiplying, we are having Vg equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by what is mu g? Mu g की वैल्यू कितनी है 1.50. So Vg is equals to कितना हो जाएगा 3. अब जो पॉइंट आओगे तो यहाँ पे डबल जीरो आ जाएंगे अपॉन 150 into 10 to the power 8 meter per second. 0 से 0 cancel. 15 1 15. 15 2 how much 30. So Vg speed will become 2 times the 10 to the power 8 meter per second. Now from this you can understand that the velocity is reduced from 3 to 2, and it is reduced by 1. Once the light ray is traveling from air to glass, the velocity of light is decreased and it becomes 2 into 10 to the power 8 meter per second. I think you all understand these two questions. Okay? In the previous question, please make sure that I have not cross multiplied it and I have just solved it. वहाँ पे यहाँ पे Vg आ जाएगा, mu g डिनोमिनेटर में आएगा, then you will solve it and Vg you will calculate. Okay? चलो. Now we will do the next question from this chapter. Question number 3. Just wait for a while. I'll give the next question that we are going to do. The next question is, you are giving kerosene, turpentine and water. In which of these does light travel fastest? This is given on page number 176. Okay, the question is given on page number 176. So you have given, you know that refractive index of kerosene is 1.44, while mu turpentine is 1.47, and the last one which is given is water is 1.33. Now while looking at the refractive index, you can understand in which of the media the light will travel faster. This question is from NCERT. You know that higher the refractive index, जितना ज़्यादा refractive index होगा, higher will be the, or you can just have a relation like this. Net refractive index is directly proportional to or inversely proportional to the speed of light in that material. Speed of light. अगर refractive index बढ़ता जाएगा, speed of light decrease करती जाएगी इस medium में. Now you can see from the above that the lowest refractive index is of water. सबसे कम refractive index, it means the light will travel. अगर mood decrease हो रहा है तो light की speed increase हो रही होगी. तो अगर refractive index of water is less, among these it is least, therefore the light will travel faster in this media. The light will travel faster in water. Okay, among these three, higher the refractive index, these three, higher the refractive index, lower will be the speed of light in that media. So this question is given on page number 176. I hope you will do it.
Next question that is given on page number 176 is the refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? Okay. So question, I hope you have done it. Okay. So question number 4 is mu D is equals to 2.42. What do you understand by it? अगर आपको डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो आप इसे क्या समझते हो? सिंपली यू नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एक्चुअली गिविंग यू द how much the light will bend or the change in the speed of the light. So it gives you that the speed of light in diamond will be equals to 1 upon 2.42 because air में speed of light कितना होता है 1. अगर आप उसको 1 ले रहे हो तो सॉरी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले रहे हो उसका एयर का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड में कितना है 2.42 है. स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितना हो जाएगा 1 upon 242 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. ठीक है. तो दिस इज द सिंपली मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड. और किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है किस एक्सटेंट तक स्पीड ऑफ लाइट बेंड करती है या डेविएट होती है इन दैट मीडियम. ओके. सो नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. Now having question on refractive index, I will start the question which are based on both reflection and refraction from the first question. Now first I will take the MCQs which came in exam, 1 markers. The first question which came in exam or mostly comes is focal length of a plane mirror is. The question which came in exam is the first question which came in exam is focal length of a plane mirror. I am taking the CBSE papers beta. ठीक है. तो make sure you will do these question in your practice copy बना लो जिसमें आप previous years के papers करोगे. Only among all these options you will write the correct option, and if I am giving any explanation please note it down that explanation below the correct answer. Okay. So the question is focal length of a plane mirror is. This question is came in exam and the options were A 0, B infinite, C 25 centimeter and D minus 25. Now you have to answer the correct among them. I hope most of you know the answer, and the correct answer is infinite. The focal length of a plane mirror, the mirror which we talk about is here, plane mirror is infinite. I have already told you about it in the first videos I have already explained that. Now, the second question that came in exam was an object is placed at a distance of 10 centimeter in front of a plane mirror, then the distance of image form is. The option given the distance of image form will be the option given were A 5 centimeter, B 10 centimeter, C 20 centimeter and D 0. Now please try to do this. Try to do this numerically.
that is then when an object is placed in front of the mirror, आपको पता है उसकी इमेज हमेशा कितने डिस्टेंस की ऊपर बनेगी, जहाँ पे आपका इमेज, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस में प्लेन मिरर में इमेज बनती है. सो यू नो दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 10 सेंटीमीटर पे बनेगी. ठीक है, ये चीज समझ में आया. इनफाइनाइट होती है फोकल लेंथ, while the image the distance of the image is always equal to the distance of object from a plane mirror. Okay, therefore the distance of image here will be 10 centimeter. Now we will do the next question. I hope all you have all noted down. आप सभी questions noted down कर लिए होंगे. The next question, question number 3. MCQ question number 3. I will explain it. I hope you all understand it. Okay. While v, small letter v, is the speed of light in any medium, then the refractive index of the medium is given by mu of medium is m is for medium. बेटा यहाँ पे कोई भी मीडियम हो सकता है, आप वाटर ले सकते हो, एयर तो आपने लिए हुए, एयर तो ऑलरेडी आप हैव टेकन द स्पीड ऑफ लाइट, तो एयर तो आपने लिया ही हुआ है, तो आप कोई भी मीडियम ले सकते हो. उस मीडियम में स्पीड मतलब किसी भी मीडियम में एम इस मीडियम में आप एम लगा ही हो, इट इज नॉट एज नेसेसरी. यहाँ पे म्यू का मतलब क्या है, द मीडियम फॉर विच यू आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द रिफ्लेक्टेड इंडेक्स, म्यू इज इक्वल्स टू speed of light in air upon speed of light in the medium. आप क्या करोगे, you will calculate the speed of light in the medium and you already know about the speed of light in air. You will take a ratio of both and the number, a constant number that came is actually giving you the refractive index of that medium. किसी भी medium का refractive index आप निकाल सकते हो. Now you know that the speed of light in air is always represented by small letter c, which is equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second. What is c की वैल्यू हमेशा क्या होगी, न्यूमेरिकल में यूज करनी होगी, 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, this is the speed of light in air. Now it is, since it is a ratio, आपको refractive index फाइंड करना है ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे क्या करोगे, स्पीड ऑफ लाइट आपको एयर में पता है और आप उसको डिवाइड कर दोगे, जो भी आपका मीडियम था उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे then you will get the refractive index of the medium. This is the second formula of mu. Okay, and this is the important formula of mu. Now you have to understand that how you will relate velocity or speed of light to refractive index of the medium. Okay, I hope you all get this. See the board very carefully. Okay, class. Okay, now you can see on the board. Hence, this is the next definition of refractive index. ये दूसरी डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट. अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट टर्म्स में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो यू कैन यूज दिस डेफिनेशन फॉर एनी टू मीडियाज, किसी भी दो मीडिया के लिए. See, for any two media, the refractive index of the second medium with respect to the refractive index of with respect to the first medium
Refractive index of the refractive index is the ratio of the velocity. Refractive index is the ratio of the velocities of the light in the mediums. जो भी मीडियम्स हैं उसमें जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी उन्हीं का रेशियो आपको क्या दे देगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे देगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, हाउ विल यू कैलकुलेट इट? फर्स्ट यू विल राइट इट एज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, आपको याद है पहले आप मीडियम 2 को ऊपर लिख रहे थे एंड मीडियम 1 को बाद में, बट इस केस में जब आप वेलोसिटी के टर्म में आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हो तो यू विल राइट वेलोसिटी ऑफ एयर फर्स्ट एंड जिस मीडियम के लिए निकालना है उसको डिनोमिनेटर में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज c to the velocity of light in glass is vg. तो ये आपको क्या दे देगा? That this will give you about the refractive index of glass. ठीक है. Similarly, अगर आपको refractive index of water निकालना है with respect to glass, तो आप कैसे, या with respect to glass या with respect to, पहले तो आप air ही निकालो. With respect to air, how will you calculate it? First you will write it as mu. आपको water का निकालना है तो refractive index of water with respect to refractive index of air, and that will be equals to velocity of light in air upon velocity of light in glass. ठीक है. That is c by vg. vw, sorry, we are talking about water, na? Just wait a minute. Yeah, this is actually what? Water. In water. The second substance we have taken is water. इसको आप कैसे लिखोगे? c upon vw. अब आपको न्यूमेरिकल्स में क्या होगा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दी होगी, आपको उसका वेलोसिटी ऑफ लाइट दे रखी हो उस मीडियम में, या आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखी हो विद रिस्पेक्ट टू एयर, एंड दे विल आस्क यू अबाउट कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 and medium 2. Now you all understand, you will calculate it by using these similar formulas. In our next class, see, in today's class we have finished reflection totally. हमने रिफ्लेक्शन पूरा पढ़ लिया है, in next class we are going to do numerical which came in board and the MCQ and very short answer type question that came from these topics. Okay, इस पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे, तो ये वाले न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. ठीक है क्लास? So this is for today, and in the next class we are going to do numerical on the same topic. Okay, thank you.